team members of all the colleges on a very came to know about this topic, interested to join and because as such, as a student of engineering, we have written various reports and memo writing, research proposals, and many more kind of different kinds of documents we have prepared. And as a administrator also, we preparation of various things. Now, because whenever we write a report, what the things are supposed to be there included. I think many times while writing a report, simply we say about the event date and number of participants, and then finally we photographs, and then we end up without any conclusion, I think. So there is no such mechanism we are following it. As such, everything is prescribed. What the report is supposed to. Report is supposed to include each and every aspect of any particular event or any topic or a project or anything. It has to include each and everything. That is what is missing. And sometimes even the because being an engineering graduate, sometimes we are not that much serious about. We always say that this is whatever you conveyed. I think it has been conveyed, but not following a proper sequential way of writing the things in a particular doc. So this is what is missing. I hope today the lecture by expert lecture by Dr. Shivani will definitely clear doubts and will provide a proper guidance to all the students and the teachers who are joined together today for this event. And this event will definitely will improve the writing skill of students and faculty members. So with these words, I will not take much of your time because we want resource person Dr. Shivani to be the things about writing reports and the memo writing rather than telling my experience of writing reports. So instead of that, I think Dr. Shivani is the right person. So thank you, ma'am, your valuable time. And I'm sure this time is valuable, but I'm sure this will be much more valuable for all those who are joined today. And that will be a very memorable thing for them for learning a process of writing reports and memo writing. So thank you, Dr. Shivani, once again, Dr. Himanshu Srivastav, and all the students who have taken a lot of pain in arranging this web series. This web series is now liked by many students and faculty, not only of GEC Bhavnagar, but many of the colleges. So I hope by next week, many things will be known by many. Will definitely join from Monday also. So with these words, thank you once again, and thank you once again, Dr. Shivani, on behalf of GEC Bhavnagar for your time and content that you are going to share among all of us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Principal, sir. Thank you, ma'am. Ahuti, ma'am. Ahuti, ma'am. Welcome. Yes, yes, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Am I audible, sir? Yes, ma'am. We warmly welcome you, Shivani madam, to be the part of our webinar series. And as we know very well that this technical writing, especially report writing and the memo as one type of report writing, our students need to develop these skills to write the reports, to prepare the reports with the punctuality and the diligence, and they will require the same in their academic life, research life, as well as in their professional life. I hope today's lectures will be very useful and beneficial for all the students of GC as well as of other colleges. Warm welcome to you, madam. Yes, Shivani, ma'am. Yes, thank you, madam. The PPT is visible, and you will just tell me next slide. So I'll be just switching over to the next slide, and please start. Okay. The first one, sir. Hello, friends. Good morning, one and all present here. Without wasting much time on any introduction and all, let us start directly the topic we are to discuss today. That is report writing. Right? I know that some of you
are in impression कि यार ये तो writing का topic है और writing is always a boring task and all. But mind well, friends, written communication is equally important as oral communication, and rather in any profession written communication is much more important than oral communication, right? And as far as your profession is concerned, reports are a part of your life as soon as you enter this field. You do minor research, you do major research, you do your projects, and everything is to be put on paper in black and white, right? So report writing is very, very, very crucial to your learning. So first of all, we need to understand that the report we are talking about are reports are technical reports. We are not talking about newspaper reports, journalist reports, right? Journalists को क्या करना होता है कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, that's all. लेकिन when we talk about a technical report, so we have to be very specific and very particular about the facts. Basically, report है क्या? So if we put it in simple words, report is a difficult term to define. Right? क्योंकि जब बच्चा छोटा बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में होता है और वो स्कूल से घर जाता है और घर जाते ही वो अपनी मम्मा को सब कुछ बताता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, ये मिले थे, ये किया, ये खाया, ये पिया, वो रिपोर्टिंग ही है. वहां से रिपोर्टिंग की शुरुआत होती है, ठीक है. और मोस्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जहां रिसर्च होती है वहां जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, राइट. तो रिपोर्टिंग हर जगह है, तो इट्स वेरी रिपोर्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म टू डिफाइन. लेकिन अगर उसको इफ यू पुट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो रिपोर्ट इज एन इंफॉर्मेशन prepared by a person who knows it, given to a person who requires it. जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो देता है, और जिसको देता है वो कौन है? जिसको रिक्वायर्ड है, जिसे उसको यूज करना है, ठीक है. Now, what is specific about technical reports? So they are written for a now we will concentrate on written reports. We won't discuss oral reports, we only discuss written reports, and that too technical reports, right? वो सबसे important चीज है, it is written for a particular audience and with a particular purpose. यहाँ वो जर्नलिस्ट के रिपोर्ट से अलग आता है. कैसे? तो जर्नलिस्ट रिपोर्ट वो है, वो कोई पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी छपता है एनीबडी कैन रीड, एनीबडी विल रीड, एनीबडी मे रीड, राइट. लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो सबके लिए नहीं होते हैं, कॉमन ऑडियंस के लिए नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के लिए होते हैं, और विद अ स्पेसिफिक पर्पस. विदाउट पर्पस नोबडी राइट्स द रिपोर्ट, right? It is supported by adequate evidence. न्यू जर्नलिस्ट के रिपोर्ट से यहाँ भी अलग है. जर्नलिस्ट को जो कानो सुनी मिलती है वहां जाके वो देखता है, उसको सुपरफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यूज़पेपर में आ सकती है. लेकिन एज फार एज टेक्निकल रिपोर्ट्स आर कंसर्न, कोई भी सुपरफिशियल चीजें, सुनी सुनाई चीजें रिपोर्ट में नहीं आ सकती. उसको ऐसी चीजें रिपोर्ट में आती है जिनको वी कैन गिव एडिक्वेट एविडेंस फॉर. उसके लिए हमें सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू एनालाइज इट, वी हैव टू डिराइव सर्टेन कंक्लूजंस, एंड वी हैव टू गिव सर्टेन recommendations. आगे देखिए. It describes the procedures followed in the data collection and examination of the report.
then you have to arrange that data so that you can derive certain conclusions from them, right? तीसरी important चीज यहाँ है कि you need to rely on facts only. आपको ज्यादा से ज्यादा हकीकतों को देखना है, facts देखने हैं, and then derive conclusions and give recommendations. Usually technical reports end with recommendations कि भाई ये डेटा है, इसका ये कंक्लूजन आया है, तो अब आप इसके ऊपर ये एक्शन, recommendations are actions to be taken कि भाई ये मिला है हमें रिजल्ट, तो इसके ऊपर आप ऐसे काम कर सकते हो, right? So this is the concept of report writing. So please next slide. Yes, now objectives. किस चीज के लिए रिपोर्ट राइटिंग होती है? To inform about the recent development in the company, market और प्रोडक्ट, कुछ भी नया आया है उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखिए कि एक्चुअली वो क्या है, कौन यूज कर सकता है, टेक्निकलिटीज क्या है, what are the benefits, how does it function, those things, right? Then to show the potentialities of a new product, ये मार्केट का रिपोर्ट होगा क्योंकि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो न्यू प्रोडक्ट की पोटेंशियलिटीज क्या है कि कौन यूज कर पाएगा, इसका मैक्सिमम बेनिफिट किसको होगा, ठीक है, और किस किस तरह से ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, कौन कौन से फील्ड में ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, ऐसे. Then to show feasibility of a plan. If you want to start a new business, if you want to establish a manufacturing unit, say for example, and then you have to go for a feasibility check. कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई शॉप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि आप जहां वो करना चाहते हो और जो करना चाहते हैं वो फिजिबल है कि नहीं. Friends, it is possible if you have money to start a business anywhere, right? आपके पास पैसा है तो आप कहीं पे भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है. बिजनेस पॉसिबिलिटी पे नहीं शुरू किया जाता, उसको फिजिबिलिटी पे भी देखना पड़ता है कि भाई चलो आपके पास बहुत पैसा है, आपने कहीं पे भी लैंड ले ली, लेकिन इफ यू डोंट गेट एनी लेबर देयर और इफ यू डोंट गेट एनी रॉ मटेरियल देयर, और आपको बहुत दूर से लेबर और रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी, तो मार्केट में यू वोंट बी एबल टू स्टैंड. that shows कि प्लान इज पॉसिबल बट नॉट feasible. तो ऐसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं और टू परसुएड फॉर सम फैसिलिटीज और ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये लास्ट का ऑब्जेक्टिव है जो परसुएड फॉर सम फैसिलिटीज. जैसे आपको कॉलेज आपका सिटी से बाहर है और आपको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो रही है, तो आप लोकल वो जो बस है उनको आप रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारे कॉलेज के लिए 2-4 और बस शेड्यूल करो, तो ये है कि फैसिलिटी के लिए. तो फिर आप रिपोर्ट बना के दो कि भाई दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज हाउ वी रन शॉर्ट ऑफ कन्वेयंस फैसिलिटीज, सो यू बेटर स्टार्ट अ न्यू वन फॉर अस. और ग्रीवेंस रिड्रेसल, કોઈ ફરિયાદનું નિવારણ કરવા માટે પણ રિપોર્ટ લખી શકાય. So these are the objectives. Next slide please. Now features of a technical report. So I won't go deep in this, but still you need to know what are the features. A formal report is a formal piece of writing following rules and norms. सबसे पहले ये देखो, जर्नलिस्ट के रिपोर्ट से ये यहाँ भी ये अलग होगा क्योंकि जर्नलिस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो कोई रूल्स या नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है, लेकिन हमारा जो टेक्निकल रिपोर्ट है that must follow some rules and norms. और ये रूल्स और नॉर्म्स कौन से हैं हम आगे देखेंगे भी. और ये चीजें ऐसी होती है फ्रेंड्स, as far as technical writing is concerned, I always tell my students that keep yourself updated. बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं over the period of time,
उसके फॉर्मेट में चेंजेस आते रहते हैं. जैसे लेटर राइटिंग हम लोग जब पढ़े थे तो इट हैड अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड वी आर टीचिंग अ डिफरेंट फॉर्मेट, राइट. सो कुछ चेंजेस आते रहते हैं. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट जो फील्ड है उसमें कोई चीजें डालते हैं, कोई निकालते हैं. तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो यू नीड टू कीप इन माइंड. और वो कैसे पता चलेगा? तो इंटरनेट की वजह से इट्स वेरी 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 इजी. यू गो फॉर अ टेम्पलेट, template for a latest technical report, template for a memo writing, template for letter, and you will get hundreds of templates on internet. उसमें से जो लेटेस्ट लगे, जो ट्रेंड में है, आपकी कंट्री में जो ट्रेंड में है, वो यू हैव टू एक्सेप्ट. और वही रूल्स और नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं. देन फैक्चुअल अकाउंट प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक डेटा. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी क्रूशियल टू रिपोर्ट राइटिंग दैट यू हैव टू गिव फैक्चुअल अकाउंट. कोई भी imaginary things should not be mentioned here. आपने सोच लिया वो वहां रिपोर्ट में नहीं जाएगा. आपका सोचा जो है उसको अगर आप ऑथेंटिक डेटा से उसको कंफर्म कर पाओ, उसको ऑथेंटिकेट कर पाओ, उसको एविडेंस की तरह पेश कर पाओ, तो ही वो डेटा रिपोर्ट में जाएगा. ठीक है. नो इमेजिनरी डेटा और नो इनकम्प्लीट डेटा should be given in a report with a specific purpose and a particular audience. We discussed that. It has an organized structure. We will discuss the parts of the report next, and you have to mention, you have to take into consideration all the parts. ऐसे नहीं कि आपके दिमाग में आए कि चलो इंडेक्स ही नहीं रखते हैं. You can't do that. If you think that there is no need of any title page in a report, so you are not allowed to do so. It must follow an organized structure. Then in an objective manner, you have to present your data in objective manner. Objective manner क्या? Subjective and objective are two terms you need to understand while you go for technical writing, right? What is subjective? That relates to you as a person is subjective, right? This is what I think, this is what I feel, this is what I like, this is what I believe. પોતે જે વિચારતા હોય એ સબ્જેક્ટિવ વસ્તુ છે. અને ઓબ્જેક્ટિવ કોને કહેવાય? that which can be proved by examples, by experiments, by observation, by interviews. That which can be proved, that is objective. That which can be seen, that which can be shown, that which can be done again and again in the same manner, and the result can be the same every time. That is objective, right? So report always requires presentation in objective manner. You don't have to write I like this, I like that, I think this, I think that, right? Okay. Only relevant information. There is no space for any irrelevant information. होता क्या है बच्चों कि जब we go for experiment or we go for a project, तो कई बार ऐसे होता है कि that takes a month or 2 months or maybe 4 months. ठीक. अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारा लर्निंग और भी होता है. लेकिन जब आप अपना रिपोर्ट बना रहे हो जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो जो चीजें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को के साथ रेलेवेंट है, वही चीजें आप उसमें डालेंगे.
4 महीने में आप बहुत कुछ सीखे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, लेकिन दोज प्रॉब्लम्स डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ योर प्रोजेक्ट, तो यू नीड नॉट मेंशन, right? Sometimes you get more information than required, तो you have to delimit yourself कि भाई इसको इतनी ही चीजें रेलेवेंट है इस रिपोर्ट के लिए, तो इतनी ही चीजें डालेंगे, ठीक? Then brief and accurate presentation, as brief as you can. You are not supposed to write a novel, right? So and accurate, जहाँ पे जो डेटा डालना है, देखो टेक्निकल रिपोर्ट्स ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स कि उसके ऊपर बेस कोई और वो प्रैक्टिकल करेगा, कोई और वो प्रोजेक्ट करेगा। अगर इफ यू फेल टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो जो अगला उसके ऊपर बेस कोई भी काम होने वाला है वो सही नहीं होगा, ठीक है? तो आपको एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है इन अ परफेक्ट मैनर, कि आप जितना सही इंफॉर्मेशन दोगे उतना वो काम वहां से आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो अगला उसके ऊपर जो काम करने वाला है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपने जो काम किया वो अगले को वापस करना पड़ेगा, ठीक है? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now components, very important. Two types of components. First, mandatory components. They are standard parts. And second, voluntary. आप रख सकते हो चाहे ना भी रखो चलेगा, लेकिन ये 4 जो कंपोनेंट्स है वो तो इनवेरिएबली हर एक रिपोर्ट में आने चाहिए। आगे के जो कंपोनेंट्स बताऊंगी उसमें से भी आपको खुद को पता चलेगा कि ये डालने ही चाहिए, डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज द रिपोर्ट वुड लुक इनकम्प्लीट, राइट? These are the 4 steps: title page, introduction, body and conclusion. Title page में क्या, तो the title of the report, then the name of the agency to whom the report is submitted. हाँ, अगर वो किसी एजेंसी को, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा कि कहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है? The details of the person or agency submitting the report. Then, if you have written the report, your details will be there: your full name, your enrollment number, your branch, your college, and at last the month and year of submission. कब आपने सबमिट किया, month and year, no date is required here. Right? Say for example, June 2021. Only these 4 things will appear on the title page with much of white space. No need to write any other information and make the page clumsy. Then, second important component is introduction. Not yours, of course. The introduction of the subject. क्या आएगा उसमें? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या प्रेजेंट करने वाले हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम इसलिए बोला जाता है कि वो अगर उसको आप इफ यू ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम, यू विल गो टू अ सॉल्यूशन, यू विल रीच अ सॉल्यूशन, ठीक है? और वही तो आपको प्रेजेंट करना है। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, तो व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग एनी रिसर्च और व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग एनी प्रोजेक्ट, right? You need to identify the problem and you need to put it into correct words. Friends, one more thing important here is, while choosing a title for your report, be very conscious and cautious, क्योंकि उसमें जो भी वर्ड, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करोगे उसको आपको in your report you have to justify. Why have you used these words and what do you exactly mean by these words, right? Then the purpose of the report, why are you writing, why is this considered to be a problem? आपने अपने मन से प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आपको उसको जस्टिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है? तो ये वो होगा पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। देन रीजन फॉर रिसर्च, क्यों कर रहे हो आप, आपको क्या फायदा होगा, किसी और को क्या फायदा होगा।
फील्ड को क्या फायदा होगा, यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, ठीक है। और स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने वो काम सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट किया, तो आगे उस पे क्या और काम हो सकता है, that can be the scope of the report. Now बॉडी में क्या आएगा, रिपोर्ट का बॉडी कैसे बनेगा, तो ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट और क्या what kind of equipments you have used, which laboratories you have visited, साइट पे गए तो कैसे किया, for how many days, ये सारी इंफॉर्मेशन बॉडी में आएगी और आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, नॉट haphazardly बट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, फिगर्स। देखो फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स जितना डाल सकते हो, देखो तो इंटरेस्ट उसी में होता है, क्विक इंटरप्रिटेशन इससे पॉसिबल, ग्राफ्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, इन सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करो। आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना है कि आपका शेड्यूल क्या था और कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया। देन कंक्लूजन, पूरा रिपोर्ट उसकी समरी आएगी, एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या मिला, तो मिला, उसके ऊपर से कंक्लूजन क्या होता है। रिजल्ट और कंक्लूजन दोनों अलग चीजें हैं फ्रेंड्स। रिजल्ट क्या, 2+2=4, कंक्लूजन क्या, तो दो लोग मिलते हैं तो 4 लोग होते हैं, 2 एप्पल्स और दो एप्पल्स मिला के 4 एप्पल्स होते हैं, ये कंक्लूजन कैसे। तो रिजल्ट जो है वो डेटा के बेसिस पे मिलता है, और जब आप उसको किसी और फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, या फिर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हो, या फिर उसको किसी और एग्जाम्पल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो होता है कंक्लूजन, ठीक है। उसके ऊपर से आप डिराइव करते हो कि ये ऐसा रिजल्ट मिला है, तो इसके साथ ये करने से ऐसा आ सकता है, ठीक है। और रिकमेंडेशन होने ही चाहिए कि आगे इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट प्लीज। Now, other parts, they are optional, but see the names of these parts and you would understand that these things would make these parts would make your report more readable and more authentic and more appreciable. Acknowledgement होना ही चाहिए, sense of gratitude, जिनके साथ आप लोगों ने काम किया है, जहां जाके काम किया है, जिनके गाइडेंस में काम किया है, you have to acknowledge their help, you need to acknowledge their support. आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए ऑफिशियली। Gratitude towards the people or institutes who or that helped, and a brief description of the nature of help. किन लोगों ने आपको कैसे कैसे हेल्प की, ये एक पेज का ही हो, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन you just acknowledge their help. Then letter of transmittal, ये ऑफिशियल लेटर होता है, फॉर्मल हैंडओवर ऑफ द वर्क डन, कि आपने मुझे ये काम असाइन किया था, ये लेटर है एक टाइप का, जो लेटर में रिपोर्ट में साथ जोड़ा जा रहा है कि आपने हमें ये काम सौंपा था, हमने ये काम कर दिया है, ये फाइंडिंग्स है, और हम अब आपको इसका रिपोर्ट ऑफिशियली हैंडओवर कर रहे हैं, राइट। रेफरेंस टू द वर्क असाइन्ड, मेजर फाइंडिंग्स, एक्नॉलेजमेंट फॉर हेल्प एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगेन, आपने हमें इस काम के लायक समझा, इसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर to be written.
अनुक्रमणिका होना ही चाहिए, और रिपोर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट्स सबटाइटल्स के साथ हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कि किसी को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो वहीं से मिल जाए, सीधा उस पेज पे जाके वो इंफॉर्मेशन उसे मिल सके। तो सबटाइटल सब हेडिंग्स के साथ अगर आप ये बनाए तो अच्छा रहेगा। पेज नंबर्स होने चाहिए हमेशा से, क्योंकि रिपोर्ट में बी ऑफ 20 to 25 पेजेस टू 150 or 200 or maybe 400 pages, depends on the nature of subject and the purpose of writing it. से फॉर एग्जांपल पीएचडी के थीसिस जो होते हैं वो भी एक टाइप के रिपोर्ट राइटिंग ही है, और वो हो सकता है 400-500 पेजेस के भी हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर डालना जरूरी है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट यू कैन राइट और यू कैन स्किप दिस। पूरा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, रिपोर्ट लिखा है, उसका शॉर्टन्ड वर्जन। Day before yesterday, Archana madam discussed abstract writing in detail, so I won't go in detail. Then list of abbreviations and glossary. If your subject is very technical, if you think that people who will read this won't understand the abbreviations and terminology you have used, तो आपको लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस उसके फुल फॉर्म्स के साथ और ग्लॉसरी उसके मीनिंग के साथ शुरू में ही देनी चाहिए, जस्ट आफ्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स। और टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ आप एक दूसरी चीज जोड़ सकते हो जो अभी मुझे ख्याल आ रहा है, टेबल ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, टेबल ऑफ टेबल्स। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के जस्ट बाद જેટલા પણ તમે આખા રિપોર્ટમાં ટેબલ્સ રાખ્યા છે અથવા જેટલા પણ તમે ફિગર્સ બતાવી છે એને નંબરિંગ કરીને નામ આપીને એની પણ એક અલગથી અનુક્રમણિકા આપી શકો। નાઉ बिब्लियोग्राफी, फिल्मोग्राफी, आपने अपने रिपोर्ट के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो भी बुक्स रेफर किए, जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो वो बिब्लियोग्राफी में जाएंगे। बिब्लियोग्राफी जो भी वेबसाइट्स आपने रेफर की, फ्रेंड्स यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स यू हैव रेफर्ड टू। सिंपल काम करना है, जहां से आपको वो डेटा मिल रहा है उसका वो यूआरएल पेस्ट कर लीजिए एक सिंपल वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड पेज पे, और किस दिन आपने एक्सेस किया था वो डेट एक्सेस्ड ऑन, ऐसे करके वो डेट डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स बना सकते हैं। और अगर आपने कुछ फिल्म्स देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, डिफरेंट कंट्रीज की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, तो आप उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं फिल्मोग्राफी। द लास्ट कंपोनेंट इज अपेंडिक्स। Appendix is appendix is the information that is crucial for a report, but not that crucial or not that important कि आप उसको रिपोर्ट के बॉडी में रखो। अगर ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बॉडी में लिखते हो तो रिपोर्ट अननेसेसरी लंबा होने की पॉसिबिलिटी है, तो यू बेटर keep these things in appendix। जैसे कुछ लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ टेक्निकल डेटा होता है जो अंदर मेंशन करना जरूरी नहीं है लेकिन मेंशन करना जरूरी है। देन सर्टेन लीफलेट्स और क्वेश्चन एड्स और ओपिनियन एड्स जो आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किए हैं। सर्टेन टेस्ट्स एंड मैप्स एंड डिजाइन्स जो आपने अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट के दौरान यूज किए हैं, जो लोगों को बताना जरूरी है। लेकिन अगर ये चीजें रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट में गई तो रिपोर्ट का बल्क बहुत लंबा होने की, बहुत बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो सारी चीजें आप अपेंडिक्स में, अगेन फ्रेंड्स अपेंडिक्स में नंबरिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड उसी नंबरिंग से वो अपेंडिक्स की लिस्ट आगे तक टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी होनी चाहिए। ठीक है, यस, नेक्स्ट। नाउ स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इफ यू वांट टू राइट अ रिपोर्ट, तो these are the steps to be followed
कहीं पे अंदर एक छोटा सा स्टेप आगे और भी जोड़ना पड़ेगा अगर यू आर डूइंग रिसर्च और यू आर डूइंग a thing in a particular area, right? But these are the common steps. Understanding the purpose and scope of report. क्यों रिपोर्ट बनाना चाहते हो, क्यों ये काम करना चाहते हो, ये पर्पस को काम करने से पहले, रिपोर्ट राइटिंग से पहले नहीं, काम करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसी के साथ शुरू में मैं बोलूंगी, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर इज, किसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हो, हु इज गोइंग टू रीड दिस रिपोर्ट, वो ऑडियंस को दिमाग में रखो। जैसे आप लोग अपना फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखने वाले हो, तो दैट रिपोर्ट वुड बी रेड बाय योर सुपरवाइजर, your external supervisor and some of your friends, and then it will be read by your juniors for guidance, right? Perhaps in the society nobody would read it. Yes, if you go for a particular field, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे और आप बताओगे कि हमने ये काम किया है ऑलरेडी, तो वहां हो सकता है कि आपका रिपोर्ट थॉरली स्टडी किया जाए कि एक्चुअली आपने क्या किया है, ठीक है? तो दिस वुड बी योर ऑडियंस, तो उनके लिए आपको लिखना है, ये दिमाग में रखो। Then you collect the data. Second step is collecting data. कैसे भी करो, questionnaire, opinionaire, interview, observation, site visit, experiment. Collect the data, as much data as you can. Then organization of that data. डेटा जैसे भी मिल गया उसको सीधा एनालाइज कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू अरेंज द डेटा। कैसे अरेंज करना है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वेरी सिंपल क्रूड एग्जांपल। जैसे इफ आई से कि चलो भाई नोट पेन काढो અને લખો, અને હું તમને નંબર્સ લખાઉં 48 76 57 98 2 25 17 38 67 51। अब એટલા નંબર્સ લખાવીને એમ કહું કે એનાલાઇઝ ધીસ ડેટા, તો શું કરવું પડે? સૌથી પહેલા you will arrange the numbers. એક તો એ સમજણ પડશે કે these are numbers, then you will arrange the numbers. Arrange કરીને પછી you start, as soon as you arrange things you will come to know certain things कि इसको एनालिसिस कैसे करना है। सिंपल, आपने अरेंज कर दिया, आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये नंबर्स है, उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की है, सारे पूरे नंबर्स है, कोई भी आधे अधूरे नंबर्स नहीं दिए हैं मैंने। फिर कितने नंबर्स उसमें से ऑड है, कितने इवन है। अगर स्पेसिफिक डिस्टेंस वाले नंबर मैंने दिए हैं तो आप ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई हर 4 नंबर छोड़ के एक नंबर आ रहा है, हर 5 नंबर छोड़ के एक नंबर आ रहा है। अगर हो सकता है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है कि ये मल्टीप्लाई बाय ये इज इक्वल टू ये, ऐसा कुछ नंबरिंग में कुछ दिखाई दे रहा है, तो what I mean to say is you need to organize the data before you analyze it, right? चलो, ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, एनालिसिस ऑफ द डेटा। जो भी डेटा मिला है उसका एनालिसिस मैंने जैसे बताया ऐसे, and in our field, in technical field, you have number of methods through which you can analyze the data. अगर आपको किस तरह के तरीके का रिजल्ट मिल रहा है, डेटा किस तरीके का है, वो देख के आप एनालिसिस का पैटर्न डिसाइड कर सकते हो। और एनालिसिस के लिए भी टूल्स होते हैं, वो भी आपके साथ ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है एनालिसिस के लिए, राइट? उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके ऊपर से आपको यू हैव टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजंस एंड देन यू हैव टू गिव रिकमेंडेशंस। ये सारी चीजें हो जाने के बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग रिपोर्ट। And redraft it, proofread it, સુધારો મઠારો ફરીથી લખો અને પછી ફાઇનલ રિપોર્ટ લખો, and the last step is presentation, right? Next please, types of report. If you google for it, you may find from 2 types to 24 types.
report writing and informal report writing. Here I have mentioned a few which are frequently used and which we come across as common citizens, common people. You are assigned that work, you have to submit a progress report कि भाई 3 महीने में काम कहाँ तक पहुंचा, आगे के 3 महीने में, ये टोटली 6 मंथ्स हो गए तो काम कहाँ तक पहुंचा, फिर और 3 महीने जुड़ गए, टोटल 9 मंथ्स हो गए, काम कहाँ तक पहुंचा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेस रिपोर्ट. और हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कहाँ तक खत्म हुआ काम, दूसरा कहाँ तक कितना बाकी रहा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट प्रॉब्लम्स हैव यू फेस्ड. इतना यहाँ तक काम पहुंचाने के दौरान आपको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. एंड आई पर्सनली बिलीव कि आपको ये बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आए. आपको ये डेफिनेटली बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आपके पास आपके बाद काम करने वाला अगर आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं. दूसरा, the person who has assigned you the task would come to know that आसानी से नहीं हुआ है, इतने प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ये काम हो पाया है. ठीक है. देन इंसिडेंट रिपोर्ट. इवेंट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है कि जो एक घटना बनी उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखोगे. इस तरीके का रिपोर्ट आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने स्कूल में कि भाई सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे या सेलिब्रेशन ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल इन आवर कॉलेज, दैट टाइप ऑफ थिंग. इवेंट, प्लेस, टाइम ऑफ अकरेंस, रीजन फॉर अकरेंस, क्यों वो सेलिब्रेशन किस लिए हुआ था, किस तरह से प्लान किया गया था. अगर वो इवेंट अच्छा है, इंसिडेंट अच्छा है, तो वो दूसरी बार हो तो उसके लिए क्या करना है. अगर वो इवेंट अच्छा नहीं था तो उसको रोकने के लिए क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारा इंसिडेंट रिपोर्ट में आएगा. देन ट्रिप रिपोर्ट. कोई एक टेक्निकल पर्सन किसी टेक्निकल काम के लिए किसी और जगह जा रहा है, अपना ऑफिस छोड़ के या फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो उसको वो ट्रिप रिपोर्ट बनाना है. जैसे मेरे कॉलेज में एसी लगे हैं जिसमें से 2 एसी बिगड़ गए हैं, तो आई लॉन्च अ कंप्लेन विद द कंपनी. कंपनी अपने टेक्नीशियन को भेजती है एसी रिपेयर करने के लिए. ठीक है. तो वो बंदा आएगा और यहाँ आके उसने जो काम किया है वो ट्रिप रिपोर्ट बना के मेरी साइन लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको बुला भेजा था, और वो रिपोर्ट वो अपनी कंपनी को देगा. क्या लिखेगा उसमें, पर्पस ऑफ विजिट, किसके लिए उसको बुलाया गया था, कब वो आया, कितने टाइम तक यहाँ रुका, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैड डन हियर, एक्शंस टेकन, जो प्रॉब्लम उसको बताया गया था वो सॉल्व हो पाया कि नहीं उससे, उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स आए, और कोई काम वहां पे किया कि नहीं, ये सारी चीजें. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट. जो कॉलेज और स्कूल में इंस्पेक्शन आते हैं, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं इंस्पेक्शन करने वाले लोग, इंस्पेक्टर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं, वो ये है इंस्पेक्शन रिपोर्ट. Who has assigned the work, why was the work of inspection assigned, and what is the purpose of that inspection, what the people who are inspecting have noticed in the institution, what are the good practices, what are the bad practices, and what are the recommendations, right? These are the things mentioned in the inspection report. Now feasibility report. अब मैंने आगे भी ऑब्जेक्टिव्स जो थे टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्लान, रिपोर्ट राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे मैंने समझाया कि वेदर अ प्रोजेक्ट इज केपेबल ऑफ बीइंग डन इन अ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल मैनर, वन शुड प्रोसीड विथ इट और नॉट. ये डिसीजन लेने के लिए वहां पे अगर कोई बिजनेस करना हो तो वो फिजिबल है कि नहीं, वो जानने के लिए जो होता है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है. चैलेंजेस क्या है, से फॉर एग्जांपल एवरी टाइम इट इज नॉट दैट कि फिजिबल नहीं है तो छोड़ दो, चलो ये प्रोजेक्ट.
अगर वहां करना है प्रोजेक्ट तो क्या चैलेंजेस है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, क्या नहीं है जो हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आएगी। और लास्ट इज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये आपको पता है सबको, पुलिस और सीआईडी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो ये है यूजुअली बेकार चीजों के लिए, क्राइम के लिए ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। क्या इंसिडेंट था, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या एविडेंस है हमारे पास, और आप ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, किस हैसियत से लिख रहे हैं, वो सारी चीजें। और आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, क्या मेथड्स यूज किए हैं, और दो चार मेथड्स यूज किए हैं तो हर एक में फाइंडिंग क्या आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। Right, this is the end of report writing. Sir, we can address the questions if they have any. I have given a list of videos and PPTs in the last slide. Before starting memo writing, I think we can address the questions if your students have any. Sir? Srivastav sir? Hello? Sir, am I audible? If your students have any queries, we can address regarding report. You are not audible, sir. You are not audible. No problem, sir. We can start with this. You just change the slide, second one. Next is memorandum. Memorandum is the word, and clipping is the process used to make it short. Memo. It is popularly known as memo. The literal meaning is a note to assist the memory. Memorandum is a note to assist the memory. કઈ વસ્તુ યાદ રાખીએ આપણે પ્રોફેશન માં, એના માટે આ મેમો હોય છે. They are a significant means of internal business communication in written form. I think this is the smallest form of written communication, professional written communication. जो वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन होता है उसका ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फॉर्म्स. nowadays तो बिजनेस कम्युनिकेशन હવે WhatsApp માં પણ થવા માંડ્યું છે, but as far as official written communication is concerned, in hard copy communication જે થાય છે એમાં memo is the smallest form. And it is used for internal communication only. Memos can't be used for communication between two companies, right? It is used for exchanging information related to routine work within the organizations, right? This you have to keep in mind, within the organization, not outside the organizations. Okay, next slide please. Memo can be used. These are the purpose, these are the objectives of a memo writing. कैसे उसको memo को use किया जा सकता है? To issue instructions to the employees, किसी एम्प्लॉई को, पर्टिकुलर एम्प्लॉई को या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए. Then give and seek suggestions. If you want to suggest something to your employees, or if you want to seek in suggestions from your employees. To announce meetings, events and changes. अगर प्लान में थोड़ा सा कुछ चेंज आया है या फिर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है तो उसका भी मेमो हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है तो भी मेमो हो सकता है.
to present decisions, directives, proposals और briefings. ये सारे इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन के पॉइंट्स है कि कुछ डिसीजन लिया गया है जो आपको इमीडिएटली कम्युनिकेट करना है, कुछ डायरेक्टिव्स दिए जाने हैं हेड्स की सुपीरियर्स की तरफ से जूनियर्स को, प्रपोजल्स रखे जाने हैं या फिर कुछ ब्रीफिंग करना है सीनियर्स को, तो ये सारी चीजें मेमो से हो सकती हैं। टू ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट्स इंटरनली, मेमो के साथ कोई और डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। To inform the employees about new or changed policy, procedures, organizational details, or to request help or information to confirm a decision arrived at on the telephone. कुछ बातें टेलीफोनिकली डिसाइड की जाती है जिनको ब्लैक एंड व्हाइट में लाना जरूरी होता है फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, तो उसके लिए जो टेलीफोनिक बातें हुई है उसको भी कंफर्म करने के लिए यू कैन यूज मेमो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो कि ये सारी चीजें हमें रोज के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में करनी ही होती है, तो ये सब के लिए मेमो राइटिंग, मेमोज आर यूजफुल। नेक्स्ट प्लीज सर, उसका फॉर्मेट, द नेम ऑफ द कंपनी और डिपार्टमेंट गोज ऑन द टॉप ऑफ द पेज। मेमो की साइज हाफ अ पेज हो सकती है, उससे भी कम में भी हो सकती है, सिर्फ 2 या 4 लाइनें उसमें हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है विदाउट एड्रेस। यू नीड नॉट मेंशन द एड्रेस बिकॉज इट इज मेंट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन ओनली। तो यू नीड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, बट यस यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। बराबर, क्या तो कंपनी નું નામ લખો અથવા ડિપાર્ટમેન્ટ નું નામ લખો in the center. Then heading, 4 very crucial parts of a memo: to, from, subject and date. એને તમે એક પેજ ઉપર 2 આ બાજુ અને 2 આ બાજુ એવી રીતે લખી શકો। એક A4 સાઇઝ નું પેજ હોય તો અને 2 ઇક્વલ પાર્ટ્સ માં ડિવાઇડ કરો અને 2 વસ્તુ આ બાજુ અને 2 વસ્તુ આ બાજુ એમ પણ લખી શકો, અથવા પહેલી 2 ઉપર લખી અને બીજી 2 વચ્ચે લઈ શકો, એવી રીતે પણ કરી શકાય। that can be done. You will see thousands of templates if you google for it, a memo template ऐसा करके आप गूगल करोगे तो आपको इतने सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ टेम्पलेट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो पूरा फॉर्मेट तैयार आता है, सिर्फ आपको उसको निकाल के अपने लिए एक चूज करके यू हैव टू जस्ट गिव योर इंफॉर्मेशन। आप उस पे अपने इंफॉर्मेशन भर दो तो आपके लिए वो अपना मेमो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में आपको you have to mention the person or department to which you are sending the information. From, तो you have to mention yourself कि your department की कौन सा डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है। मेमो इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, राइट? तो कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, तो पर्सन के नाम भी आ सकते हैं, तो डिपार्टमेंट्स के नाम भी आ सकते हैं, एक डिपार्टमेंट का नाम और सामने एक पर्सन का नाम भी आ सकता है, depending on the subject. Now subject, what is it about? आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, किस बारे में है? जैसे फॉर एग्जांपल अ चेंज इन पॉलिसी, about a meeting for this event, or date is very important. See, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन માં મેમો નું બહુ જ મહત્વ એટલા માટે છે કે આ મેમો જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ માં જાય પછી ત્યાં એ ફાઇલ થાય છે, એને ઓફિશિયલ પર્પસ માટે પ્રિઝર્વ કરવામાં આવે છે, રાખવામાં આવે છે, એટલે એ ફ્યુચર રેફરન્સ માટે કામ લાગે છે, એટલા માટે ડેટ નાખવી બહુ જ જરૂરી છે। then body that conveys message. હવે body ખાલી 2 સેન્ટેન્સ પણ હોઈ શકે અને 10 12 15 સેન્ટેન્સીસ પણ હોઈ શકે, જેવી જરૂરિયાત, બરાબર? એમાં introduction maybe of a single line or maybe of only 2 sentences, then main points, they can be bulleted,
ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ને બુલેટ કરીને તમે લખી શકો એમાં. અને ક્લોઝમાં શું હોય તો કે મેમો જે વાંચે છે એને શું કરવાનું છે એ ક્લોઝમાં આવે કે ભાઈ આ મીટિંગ છે એવું તમને કહેવામાં આવ્યું, એમાં આટલા એજન્ડા ડિસ્કસ કરવાના છે, તો તમારે શું કરવાનું છે તો કે તમારે મીટિંગમાં હાજર રહેવાનું છે. That can be the close of the memo. Okay, sir, next please. હવે એ કેવી રીતે લખાય, એમાં કઈ વસ્તુ રાખવી જોઈએ ન રાખવી જોઈએ એની કેટલીક ટિપ્સ આપી છે. સબ્જેક્ટ લાઇન that summarizes the main idea. એની આપણે વાત કરી, મેં તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું. Then introductory paragraph. એ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ નું મહત્વ શું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો that quickly orients the reader to what the memo is about. આ મેમો શેના માટે લખવામાં આવ્યો છે એની એક્ઝેક્ટ માહિતી ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ માંથી મળે છે. give your, હવે એમાં શું લખવાનું તો કે give your purpose of writing, supply relevant background information and identify any task the memo is related to. એક પર્પસ કેમ લખવામાં આવ્યો, બીજું થોડીક બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ફોર્મેશન કે ભાઈ દાખલા તરીકે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે સેલિબ્રેશન ઇન આર ઓફિસ એવું એક નાનકડો મેમો છે, તો રેલેવન્સ શું છે તો કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઇઝ અપ્રોચિંગ એન્ડ વી આર પ્લાનિંગ ટુ હેવ અ સ્મોલ ફંક્શન એટ આર ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ એની બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન છે. અને આપણે શું કરવાનું છે, ટાસ્ક શું છે એ એમાં મેન્શન કરવાનું. Now body conveys the information and supporting details relevant to the memo's purpose. ફરી supporting details કે કોણે નક્કી કર્યું છે આવું કામ, આ સેલિબ્રેશન કરવાનું, who are expected to take part in it and how are you expected to take part in it. So keep the paragraphs short and focused. One main idea per paragraph. આ પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ નું આ ફંડામેન્ટલ છે કે એક જ પેરેગ્રાફમાં એક જ આઈડિયા ઉપર ફોકસ કરો. બે ચાર ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈડિયાઝ ને એક પેરેગ્રાફમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ ક્યારેય ન કરો. અને મેમો તો વેરી શોર્ટ ફોર્મ ઓફ રાઇટિંગ છે. ડોન્ટ મેક ઇટ લેન્થિયર. કીપ સેન્ટેન્સીસ ટાઇટ એન્ડ ઇન્ફોર્મેટિવ. Again, irrelevant details shouldn't be given. Any use of any flowery language should be avoided. Technical writing vastu jevi che friends. Flowery language, adjectives, long descriptions, personal opinions, આ બધું સાઈડ માં રાખવાનું. આ બધાને કોઈ સ્કોપ નથી. બધું જ ટેકનિકલ રાઇટિંગ એ ઓબ્જેક્ટિવલી થવું જોઈએ. That is what is expected. Right? Use of bullets to list information, मैं तुमने बात करी. Then close and courteously stating any expected outcome, action or other information appropriate to your purpose. When you were taught letter writing, you might have been taught that at the end of a letter you should mention okay, what is expected from you. तो એ જ વસ્તુ મેમોના ક્લોઝમાં આવે કે એ પૂરો કરતી વખતે એ જ લખવાનું હોય કે ભાઈ આ વસ્તુનો તમને ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી, હવે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષિત છે, what action is expected from you. That can be a best close for any memo. Okay, so next please. Style, this is the last and important point. Memo writing कैसे होना चाहिए, उसकी style कैसे होनी चाहिए. Very concise is very small. Make your sentences, paragraph and overall memo as brief and as focused as possible. Avoid all other information. क्यों? क्योंकि उसके बाद जो एक्शन होने वाला है, जिसके लिए हम मिलने वाले हैं, वो डिटेल सारे वहां दिए जाएंगे. आप जितना अभी के लिए जरूरी है उतना ही अंदर डालें. अगर आपको बहुत शॉर्टली उसको लिखना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें 2-3 पैराग्राफ्स लिखो. सिर्फ एक पैराग्राफ में आपकी बात अगर हो सकती है तो फाइन, वेल एंड गुड. Then clear. Get your purpose straight before you start. Then plan what you want to say and in what order. Use your memo layout to help your reader
હેડિંગ્સ, સબ હેડિંગ્સ, વ્હાઇટ સ્પેસ, બુલેટેડ લિસ્ટ, આ બધી ચીજોથી મેમો મોર રીડેબલ અને મોર ઇફેક્ટિવ બનાવી શકાય. લેઆઉટની જે વાત કરી છે ને, મેં તમને હમણાં થોડી વાર પહેલા ટેમ્પલેટની વાત કરી હતી, એ વાત છે કે મેમોના ઘણા બધા ટેમ્પલેટ્સ હોય, એમાં નાના મોટા ચેન્જીસ સાથે ઘણા બધા તમને લેઆઉટ્સ મળી શકે. તમારા પર્પઝને બેટર સ્યુટ કરે એવું એક લેઆઉટ પસંદ કરીને યુ ફિલ ઇન યોર ડિટેલ્સ અને કીપ ધ ઓર્ડર ઇન માઇન્ડ. ત્રણ વસ્તુ એક સાથે મેન્શન કરવાની છે, તો કઈ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પહેલા આવે, પછી થોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓછી હોય પછી, અને પછી લીસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એવી રીતે ક્રમ ગોઠવી શકો. Then it should be direct. Speak directly. કોઈ ગોળ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને ગોળ વાતો કરીને તમે એને કોઈ વ્યક્તિને મુદ્દા ઉપર લઈ આવો, એવું નહીં. મેમોમાં એવો સ્કોપ જ નથી. બહુ નાનકડી જગ્યામાં બ્રીફલી લખવાનું છે, તો કોઈ ઇનડાયરેક્ટ વસ્તુ આવે જ નહીં, બધા ડાયરેક્ટ પોઈન્ટ્સ જ આવે. Speak directly to your reader as you would in person or on the phone. તમે સામસામે વાત કરતા હોય એવી રીતે ડાયરેક્ટલી વાત કરો. Don't use unnecessary, sorry, અહીંયા મિસ્ટેક છે. Don't use unnecessary details. Think of what questions your reader wants to answer and then answer them. કોઈ પણ પ્રકારનું ટેકનિકલ રાઇટિંગ કરતી વખતે, નોટ ઓનલી મેમો, એક વસ્તુ યાદ રાખો ફ્રેન્ડ્સ, કે ઓડિયન્સ કયું છે અને એ ઓડિયન્સના મનમાં આ વાંચીને શું સવાલ આવે. તમારી જાતે ઇફ યુ સ્ટાર્ટ ઇમેજિનિંગ, તો જેટલી નેસેસરી ડિટેલ્સ છે એટલી તમે અંદર આપી શકો, કે ભાઈ તરત આવો સવાલ થશે, એની પછી આવો સવાલ થશે. જો મને થાય તો હું એનો આ જવાબ આવી રીતે આપું, તો એવી રીતે તમારું ટેકનિકલ રાઇટિંગ પરફેક્ટ બનતું જશે. And a memo should be clean. Reread, revise, edit and proofread. 4 લીટી લખીને મેમો મોકલો, એમાં 24 ભૂલો મળે, એવું ન થવું જોઈએ. ફોર્મેટની મિસ્ટેક્સ પણ અવોઇડ કરી શકાય. પ્રૂફ રીડિંગથી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક્સ અને ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક્સ પણ અવોઇડ કરી શકાય. રીરાઇટ, કોઈ પણ લખાણ ફ્રેન્ડ્સ આપણી સિવાય બીજું કોઈ વાંચવાનું હોય એટલે રીરીડ એન્ડ રીરાઇટ, રીડ એન્ડ રાઇટ. Just write and rewrite and read it. We also read and read. We don't give you anything without reading or proofreading it, right? So don't expect કે તમે એકવાર લખ્યું એટલે પૂરું થઈ ગયું. હંમેશા પોતાનું લખાણ 2, 3, 4 વખત વાંચો જ્યારે તમારે બીજા કોઈને દેવાનું છે, right? So this way you can master the things. Next slide please. I have given a list of few videos, PPTs and also templates. You can go through it or you can just Google for it, templates, and you will get many. So this is the end. I hope I have justified the topics. We can take a few questions if they have. Sir? Ma'am, yes, there was a question from one of the faculty members that is there any format of report writing that we need to follow so far as progress report is concerned, or any site? I just communicated the last slide has already been focusing on certain sites. We see when reports are to be presented to a particular institution. So the institutes nowadays have cultivated the habits of providing the formats. Usually they provide formats because if they don't provide formats, people present things in their own ways, right? So we certainly find formats for reports. If you Google for it, you will find a common trend, and if you visit the site of a particular company or a particular institution, you will certainly find certain instructions that are to be followed, the norms that are to be followed while preparing reports.
से फॉर एग्जांपल कैसे इसको समझना है कि भाई यूनिवर्सिटी है वो पीएचडी के थीसिस के लिए जो गाइडलाइंस देती है वो रिपोर्ट राइटिंग के गाइडलाइंस है कि भाई योर थीसिस शुड कंटेन दिस तो वो गाइडलाइंस है, right? That kind of things are available with companies also. I hope I'm clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are students who are overwhelmed with your teaching, and they have mentioned that. Please. I'll quote Paras, who has just mentioned, "Thank you so much, ma'am. It was a very wonderful session. No questions. Very nice session." Yes, please. अगर आपने पढ़ाया होता तो पढ़ा नहीं होता, मेरे स्टूडेंट्स भी यही करेंगे सर। चीज मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। Yes? There are students, ma'am, who are desperately waiting for this lecture series, the next lecture. They message me up on WhatsApp, and genuinely they give this comment. It's not about, A nice initiative, sir. It is a nice initiative, right? I appreciate. और एक डिफरेंट एक्सपोजर हमें मिले तो हमें भी अच्छा लगे सर, बच्चों को तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। Students, if you have any question related to memo writing, you have a couple of minutes. You can mention into the comment box. I'll read on your behalf so that it gets answered. Even if it is not striking you right now, you send me your question. I'll send it to ma'am. There are a couple of students who are into the lecture, so they will be watching this later on. And if they have any questions, I'll be posting it to you, ma'am. Definitely. Till then, it's marvelous. It's thank you, ma'am. Thanks for the session. A lot of comments waiting for you. And really, you have truly justified both the topics very honestly, covered almost all the areas. My dear students, I have always been telling you, I always tell that the subject like English that we have in our syllabus, or communication skills, or professional ethics, or IPDC, or CPD, these are the subjects that are in our syllabus to make you an overall human being. There are certain things wherein, life is the balance of hard skills and soft skills. Like letter writing ho gaya, soft memo writing ho gaya, report writing ho gaya. This will be with you till you are on this earth. Yes. True. The owner of a firm, you will be working somewhere. Every perhaps, and even in their personal every lives. time perhaps you will be. Every time perhaps you will have to write reports, write letters, write email, drafting will go on. There would be lots and lots of report. I mean, these teachers, they know, even the managers, assistant managers, even a simple clerk knows in a company that reports, drafting, memo drafting, writing them, all this have now become an essential part for an overall development. So these topics are there in your syllabus, apart from your hard skills that are being taught to you, so that your overall personality develops and you become a successful human being and a successful engineer as well, and others. Thank you, ma'am. On behalf of GEC Bhavnagar, we thank you for your invaluable time. Time की कोई कीमत नहीं होती है, but sparing time for the students is absolutely stunning. Thanks a lot, ma'am. We thank Media Cell, though it's a part of our cell, but still I always thank Media Cell, especially Dijesh and Madhav. They have they have done, both of you have done a commendable job, you and your Media Cell. They spare the data and everything, they set up everything and make everything live. They have been on their toes from the day I have started this. Thanks to both of you. Ahuti ma'am, your kind words. Ahuti ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am.
please share some words. We have Yes, audible? Yes. yes, ma'am, you are audible. Thank you, first of all, Madam Shivani, Madam, because as we know that engaging our students for composition classes is always very challenging task, and you did it so well today. And as Srivastava sir has mentioned to your students, whenever you learn any topic on communication skills, I have already explained you in our classes that communication skills leads after all to soft skills development, and soft skills development again are a part of personality development as a whole, and personality development can never be viewed apart from your professional development as well as the quality life you will live. So in a way, small step, but it will lead you towards the success. All the best to all of you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shivani, ma'am, after your lecture gets over, please log into our channel, GEC BVN students. There are so many nice comments waiting for you. The students have sent their regards, their way of greeting you by mentioning something about the lecture. Sure. Very sweet. I won't be reading it out. No, You Shivani, just sir, go to it. I will want you. I'll be pleased. And that's Thank it. you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. And in times when GC Bhavnagar needs you, you'll always be available with this assurance. I'm taking it on your behalf itself. Yes. Thank you, ma'am. Yes, thank you. Have a nice day. Have a nice day to all the students. Monday we'll be again back with one more lecture. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice day.